Mr. Jain, Yes, your sir. Namaskar, sir. Namaskar. Your LLB is complete? Yes, sir. Everything? It is complete. What were your choice papers in law? Sir, yes, sir. Sir, in LLB, we were taught constitutional law, administrative law, torts, and criminal law. And there were almost 50 papers actually over 5 years. The law of torts, is it in use in India nowadays? Is it still used in India? Yes, sir. It's used. Sir, because law of torts is a residuary law. If any act is not there to define anything, then the courts take recourse to law of torts. One very prominent application is the doctrine of absolute liability. For instance, in the Oleum case or Bhopal gas tragedy, the law of torts in absolute liability was used to grant compensation of 200 plus crores, is what I recall. Jain, can you enlighten me about what is being argued or what are the points under argument before the Supreme Court as far as SIR is concerned? What is being argued? What are the points of contention? Sir, one very primary point is with respect to the exclusion of voters in cases of logical discrepancy. For instance, in West Bengal, there were differences in the names of voters because in Bengali Bhasha, they use Just a minute. Actually, I am not asking for details. I am just trying to understand what are the points of contention, legal point of contention. You see, there has got to be legal points which are to be contested. So, can you summarize those legal points? Sir, the primary legal point is with respect to Article 326, the right to vote of legitimate voters. That is the core issue. And with respect to SIR, the second point is the process itself is considered to be a bit hurried, and that is violating the above mentioned right. As a student of law, do you think that the second point which you just told, hurried, process is hurried, has any legal significance or legal validity at all? Sir, the limited legal validity is with respect to substantiating the first point, and the final decision is with the court. Usually yes. My question is very specific. My question is, what are the points of contention, legal contentions? See, because as far as our constitution goes, our law goes, our system goes, this is for the executive. Yes. How to implement a law. Supreme Court doesn't carry the process. Supreme Court will have to tell whether this process is legal or illegal. My only point is because I am not able to understand. I think that you are a law student and you might be knowing better. My simple question is, what is the legal point which is being argued in the court? Sir, the SIR process itself is not in question. What is in question is whether legitimate rights of voters that are granted under the Constitution are they being violated. And the court is now hearing the matter primarily with respect to the West Bengal.
is what I've read. Before that, it was hearing about Bihar. Are the Yes, sir. issues different? Now it will be hearing about UP, but the law will remain the same. True, sir. So my question still remains unanswered. Anyway, forget it. You remember Ayodhya case? Yes, sir. I was wondering, I mean, now it is immaterial, but I was wondering and I thought that you being a bright student might answer my question, my satisfaction, that basically it was a civil suit. Yes, The Babri Masjid issue was basically a civil suit, fought as a civil case, decided by civil judge and then. How it became constitutional issue? sir. Am Yes, I clear? Is my yes, question correct? My question is how it became constitutional issue from being a civil case. sir. Originally, it was a civil suit with respect to the land title, and although the Supreme Court in this particular case utilized its constitutional powers under Article 142 for doing complete justice, and that was one major reason, what I can fathom, that created it to be a question of interpretation of constitution and whether the Supreme Court can intervene. Yes, very good. So you are clear about it. Huh? Now, coming back to the authority of CEC, Chief Election Commission, or Election Commission, that is, whether it is authorized to judge the citizenship of any person. No, sir. The Constitution in Article 324 gives its two primary powers. One is to superintend, direct, and control the conduct of elections, and second is the management of electoral rolls. So it doesn't have power to find out decide the citizenship of a voter, isn't it? No. Yes. So aren't it doing the same thing? As a student of law, what would you say? Sir, in the case of Mohinder Gill, the Supreme Court clarified that the Chief Election Commission has sea of powers to ensure free and fair elections, and as a consequence of that, this CEC is exercising this power so as to ensure that the electoral rolls are proper and updated. Mr. Jain, it appears your father is in HJS. Is in HJS. Yes. And your career is also based on law. So why won't you prefer PCS-J rather than PCS? General Executive. Why Sir, won't you? two reasons. First, so during the course of my law graduation, I did internships at various law firms and with advocates. So I realized that my temperament was not aligning, first. And second, the most important reason was that I feel that in public service, my role can be preventive, prevent a dispute rather than come in at a later stage as maybe a judge to try to resolve the dispute and decide later. So it's a question of
my temperament and what I feel was best suited to my choice. Your choice. Okay, so nice of you. Good. Please. अभी सामने है, इसको तो कर लीजिए. अच्छा ठीक. हेलो जयंत. Yes, sir. आपको देख के और आपको सुन के अच्छा लगा. बट ये बताओ जयंत कि आपने बताया कि why you are not going for, I think you will try for judicial services also. Sir, I'm not inclined to. Also, one major reason is that the Supreme Court in 2025 May has introduced the requirement. Yes, sir. Yes. बट इसमें आओगे तो किस लेवल तक की सर्विस ज्वाइन कर सकते हो? नायब तहसीलदार, वो सप्लाई इंस्पेक्टर, तो एक कट ऑफ आप अपना रखोगे ना कि इसमें होगा तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. तो कहाँ Yes, तक गाइड किया आपने? Sir, mainly two services. First is the deputy collector, and second is specialized law posts for sub-registrar. Sub-registrar. How do you think it is a specialized law services about sub? Just they go for the registry, their act is defined. That is absolutely not. Fine, but it's good. You can try for civil services also. I think IAS. Sir, actually, I have written 4 mains of civil services, but by a few margin of marks, I could not clear. No problem. So, yes, sir. It is never failure. It is learning or success. Okay? Yes, sir. आपने अपने हॉबी में लिखा रीडिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कैन यू ब्रीफ समथिंग अबाउट इट? Sir, since artificial intelligence as a field is very dynamic and evolving these days, so in my free time, I like to read newsletters and explore some legal dimensions with respect to artificial intelligence. You want to practice in that dimension also? Sir, I'm not very inclined. It's a hobby that I like to keep it in my free time. Okay. Can you tell me 5 benefits of artificial intelligence and 5 negative points of artificial intelligence? Sir, benefits first, efficiency. In my personal experience also, through tools like ChatGPT, I can summarize a lot of stuff. Second is analysis of complex, let's say, legal papers. And third is language translation that also has very practical use in India. Correct. And fourth is in law and order also. AI security cameras are now being widely installed. And fifth is with respect to service delivery, where we can, yes, sir. And negative points. Yes, sir. Weaknesses. So one is hallucination. In that it creates new content that not really exists, like made up Supreme Court judgments I've witnessed. And second is it's not explainable. It does not demonstrate what is the underlying reasoning behind its decision. And third is it's artificial intelligence. It cannot replicate human wisdom that comes from lived experience. Fourth is I can recall 3 only right now. No. So it's good. So fine.
and I am switching it over to our new member. ओके जयंत, यस सर। जयंत आप जुडिशियल बैकग्राउंड से हैं, फादर आपके हैं, सर्विस में हैं। ये जो पुलिस अभिरक्षा में हत्या होती है, इस पर आपका क्या नजरिया है? कैसे हो गई? क्रिमिनल्स आते हैं, उनके पास इंग्लिश वेपन्स होते हैं, हत्या होती है, और फिर क्या फॉलो अप होता है वो नहीं मालूम पड़ पाता। इसमें आपका अपनी विचारधारा क्या है? कई केसेस हुए हैं सर। पुलिस का काम है प्रोसिक्यूशन और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करते हुए क्रिमिनल्स को कन्विक्ट कराना, दैट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट कई बार होता है कि सेल्फ डिफेंस में मान लीजिए कि पुलिस की कस्टडी से एक्यूज्ड फरार हो रहा है, तो उस केसेस में, या फिर फायरिंग सामने से होती है, तो उन केसेस में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ सकता है। प्राइवेट डिफेंस का एक राइट क्रिमिनल लॉ में भी है, और इसके लिए ये प्रॉपरली फॉलो हुआ है कि नहीं, इसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी जो एनएचआरसी की गाइडलाइंस है वो होती हैं। जब वो उधर से क्लीन चिट मिलती है तभी उसको वैलिड माना जाता है। ठीक। अच्छा, ये जो बुलडोजर जस्टिस चला है, इस पर आपका क्या विचारधारा है? सर मैं इसको बुलडोजर एक्शन कहूंगा। जस्टिस तो तब होता है जब ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर आई थिंक गाइडलाइंस दी थी जिसमें जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। एग्जाम्पल कि 15 डेज का पहले टाइम दें आप किसी को एक्यूज किया है तो, और फिर एक्नॉलेजमेंट हो, और वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही अगर एक्शन लिया जाता है तो वो जस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एनक्रोचमेंट पब्लिक लैंड पे है तो वहां पे बुलडोजर से वो प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है, लैंड गवर्नमेंट की। अगर एनक्रोचमेंट नहीं है, किसी का रेजिडेंस है और बिल्कुल उसने अपना बिल्कुल एज पर रूल बनाया है, उस पर अगर बुलडोजर चले तो क्या आपका विचारधारा है उस संबंध में? किस तरह से आप इसको लेते हैं कि क्या ये समाज के लिए जरूरी है? कोई हम मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई दुर्दांत टाइप के लोग होंगे, है ना, जो दहशतगर्दी टाइप के लोग होंगे, उनको हम इस तरह से मैसेज दे के समाज में एक नया मैसेज दे सकते हैं? क्या इस तरह से कोई बात है? सर मैसेज देने की बजाय लॉ का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। अगर किसी ने प्रॉपर परमिट के साथ और नक्शा पूरा पास करा के अपना घर बनाया है तो फिर उसको गिराना मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा, क्योंकि बेसिक क्रिमिनल जो लॉ का प्रिंसिपल भी है कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। कोई अगर एक्यूज्ड है तो उसके घर वालों को जो निर्दोष हैं उनको आप पनिश नहीं कर सकते। ये मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में तो अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसी कुछ घटना हुई है जिसमें ऐसा नहीं किया गया है और कोई कोर्ट के भी गाइडलाइंस नहीं आई? अगर आई तो उसको धरातल पर वो नहीं दिखी हम लोगों को, तो ये क्या स्थिति है? सर जितना मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोर्ट ने गाइडलाइंस तो दी हैं, लेकिन धरातल पे अगर नहीं अप्लाई हुई है तो वो कहीं पे लॉ पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का गैप हो सकता है। बट मैं एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। जयंत, आपने डिप्टी कलेक्टर के बाद सीधे सब रजिस्ट्रार और बाकी जो लॉ से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको ही प्रेफरेंस दी है,
डिप्टी एसपी वगैरह को क्यों छोड़ दिया आपने? सर डिप्टी एसपी को मैंने 4th या 5th ऑर्डर में नंबर में डाला है, और उसका प्राइमरी रीजन है कि मेरा माइंडसेट से अलाइन नहीं हो रहा था। तो जो स्टार्टिंग की टॉप 2-3 पोस्ट हैं उनके मेरे पास पर्सनल रीजंस हैं कि मुझे क्यों लगता है कि उनको करना चाहिए, इसलिए ही डाला है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता ही है कोई भी स्टेट के डेवलपमेंट में। आपने लॉ ऑनर्स किया है, उसके बाद पीजी करने का लॉ में नहीं सोचा? नहीं सर। अच्छा, क्यों लॉ के एकेडमिक्स में करियर बनाने का कोई ख्याल नहीं आया कभी? नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट पब्लिक सर्विस सिविल सर्विसेज की साइड रहा। तो फिर आपने लॉ की डिग्री क्यों परस्यू की? अगर लॉ में करियर बनाने का ना तो एकेडमिक्स में, ना लीगल फील्ड में, ना जुडिशरी में जाने का इरादा नहीं था, तो लॉ करने का पर्पस क्या था? सर लॉ तो मुझे लगता है कि एडेड एडवांटेज है ऑन ग्राउंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरह से लॉ इन मोशन ही है, लॉ का एप्लीकेशन ही है हर एक एस्पेक्ट में, चाहे रेवेन्यू कोड हो चाहे कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि फील्ड पे एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मैं अपनी लॉ की डिग्री और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यूज कर पाऊंगा। अच्छा, हम लोग अक्सर सुनते हैं देखते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी पढ़ते हैं कि 20-20 साल मुकदमा चला किसी मामले में, और बाद में कोर्ट ने कहा भाई ये तो निर्दोष है पूरी तरह से, और इनके विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं सिद्ध हो पाया और पूर्णतः निर्दोष हैं और इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन अब 20 साल तो उसकी जिंदगी के चले गए। तो अब ऐसे में क्या उसको कॉम्पेंसेशन किया जा सकता है, या कोई ऐसा प्रोविजन है जिससे कि इस तरीके का फॉल्स प्रोसिक्यूशन ना हो? उसमें इतना लंबा समय जो लग गया, जीवन चला गया, कैसे उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई उस आदमी की। क्या किया जा सकता है, या ऐसा कोई लीगल प्रोविजन है जिसमें कुछ कॉम्पेंसेशन वगैरह हो सकता है? सर आपने सही कहा, प्रोसेस इटसेल्फ इज पनिशमेंट इंडिया के केस में। एंड प्रोविजन के रिगार्डिंग सर, एक तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन जो होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में टॉर्ट्स में ही ये अलाउ होता है, ऑल्दो बहुत ही रेयर है ये, कि क्योंकि आपको एक साइमल्टेनियस अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट चलाना पड़ेगा, और कोर्ट्स भी बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं होती हैं क्योंकि उससे और बर्डन बढ़ता है कोर्ट्स का। एंड प्रोविजन एज सच मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक बात। ठीक है जैन, योर इंटरव्यू इज ओवर।